Okay, so can you see my screen? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So let's open our model. Guys, just hold a second. Okay, so in last session we saw uh, how to add the walls and how to add the wall with continuous footing. Okay, if you have step difference, so you can add this. So if you go again and click on the wall, so on structural walls, so you have many option here. Suppose if you want to add a straight wall, so suppose if you go to the ground floor and suppose if you want to add just straight wall end to end, so you can go to the wall, click structural, and you can use these different features. Right? So suppose if you want to add straight walls end to end, so you can use this option. Right? Then if you want to add a chamber wall, means you have already size for your rectangle chamber or square chamber, so you can just give the dimension and you can add here. Then these are the different shape and these are the curve. Suppose if you want to add a curve wall, so if you have start point, end point, and radius, so you can add. Right? Then if you have already reference line or any lines, or you can say the path, so you can use this option pick lines. Just click on that. Okay, so simple wall command. Then next one is, okay, so floor is done, isolated footing. Okay, so next today we are going to see if any shape is not in this what we'll say with this command. Okay, so for example, if you add some different beam size or column size, and those I will just share here. So as per your requirement, suppose if you want to add this type of column, so this is square column, you can easily add by using the family. But if you want to add some odd shape like that, uh, so suppose this is your column and this part is not okay, so this type of column if you want to add, so you can't add from here, so you can add only rectangular or square column. Okay, so suppose if you want to add something odd shape as per your requirement, so you have here option. So if you go to the component and model in place, so by using this tab you can create different shapes. Okay, so just go first, click on component and say model in place. And okay, I want to add a column here, so you need to go to the right family category. Okay, so you need to find out structural column. So if you go here, so here structural column, so just click here. Okay, and you can give the name as per your reference. So say column uh, 1 2 3 whatever. Okay, so I will just add here column 1 and say here okay. Then once you click on okay, so this different tools. Okay, so we will see one by one. So first is extrusion. So if I move my cursor on this tab, so you can see the video. Okay, so for example, if you want to extrude some shape in horizontal direction or vertical direction, so you can use this option. Okay, so right now I want to add the column, this shape of column means vertical, so I will use the vertical extrusion. Okay, so if you go here extrusion and say click here, click on that. Right, and by using this option you can add your column.
So for example, I want to add a column 800 by 800. So I will just add here 800, and this is also 800. So this is my 800 by 800 column, and I want to add a just flower shape column here. So I will use this option, start end radius. So click on that. So this is your start, this is your end, and this is your radius. Similarly, start, end, and this is your 400 radius. Similarly here, then similarly here. Okay, once you add this shape as per your requirement, so just delete this. So this is my column, and I want to add this shape of column and say okay and finish. So if you look at in 3D view, so you can see your column has been added here, but you need to give the length. So if you go to the elevation, so east elevation, okay, so in elevation our column is not clear. So what I do, I will cut a section here in ground floor. So I will add a section here, right? And say go to view. So this is your shape, right? And okay, so this level is not, we are not able to see because why? Our column is just behind this grids. That's the reason we are not able to see. So what I do, I will just move here and paste here, right? And then you can see in your section. So I will just move this section also exactly here through this column and just say go to view. So you can see this is your column. So column is start from ground floor, right? But you can't give any base offset because this column we have created by extrusion command. So you need to just manually extend this. Suppose this column is going from ground to floor, so you have option click here and just pick this arrow, and you can just drop here, or otherwise you have option al command. So type align command al. So I want to align this face to this face, so select this and then select this. If you want to lock this, so you can lock. So we can't change this top of column. If you look at in 3D view, okay, so this is your column, right? 800 by 800 column. Then after that you can change the material also. So click here, go to again edit in place, click here, then you have option here material. So click on three dot, and then you can assign the cast in place gray material and say apply and finish. So you can see we have create this type of column. You can create any type or any shape in vertical direction or horizontal direction. For example, we will take another example. So suppose we need to add some uh, just looking for a aspect, what we'll say, as per the requirement, architectural requirement, we want to add some shape here over this our uh, top of wall. So for example, I want to just, so suppose this is my wall, right? And I want to add this dome structure like that on that wall, right? But we don't have any dome structure here over this wall. So you can create, right, as per your requirement. Okay, so I will just add here. Okay, so okay, I want to add here, right? So before adding, so just cut a section one through this. So suppose I want to go here roof level. So I will just move this and go to view. So this is our parapet wall, right? This one. And suppose I want to add some shape here. So go again, but you need to check first category. So what is the category? Walls. So you should take a same category. So go to here structural component, model in place, and click here wall, right? So you have option here walls and click here. You can give the name
as per your requirement, wall 1, wall 2, whatever. Okay, then you have option here, extrude, extrusion. Okay, so click on that. Then after that he said pick plane, in which direction you want to extrude this, right? So click on that, and you need to go in your 3D model. Suppose I want to add in this, on this direction, so click here set, and say here pick a plane and say okay. Suppose I want to add over this wall, so click this plane because I want to add this in this direction, right? So once you given this direction, go to your section, then you can, I have given the set plane this one. Okay, means parallel, my shape is parallel to this line, this shape, this plane. Then you can add your shape. So you can add, suppose I want to add here 500 high, then I want to add this type of shape, or yeah, just consider. So what is the 280 radius? Then you can just mirror. So select this and you can use this option mirror. Click on that, and simply you need to select the center line of the wall, 1 point and 2 point, and you can just delete this, right? So you have added this. If you want to add something or some different shape, so you can add. So suppose I want to add this type. Okay, and you can just trim this, right? And you can select this, click on mirror, and you can just mirror in opposite direction and give again trim command, and then delete this one. Okay, you need to complete this shape, so you need to just complete this shape, right? And say okay, and say finish. If you look at in 3D view, so you can see your shape is ready to place here. Then you need to just give al command, type al, I want to fix this face to this face. So click here and click here, right? Then click here and click here. If you want to lock it, so you can lock, right? Like that. Then after that, simple, you need to just click here again, edit in place, select, you need to just change the material. So instead of by category, you need to add here concrete cast in place. So we need to assign the same material we have already in wall. So you can see, so if I cut a section through this wall, so you can see we have already cut section here. So select this wall, and once you select this, modify wall table is active, then go to here join. So select this wall and this shape, so this will be joined to each other, right? So if you look at, so you can see your wall it looks like. Okay, so you can extrude any shape in vertical or horizontal direction. Okay, so if you go again on ground floor, right, and if you go again structural, then click here model in place, and suppose I want to use some walls. Okay, and extrude here, and you can go with that wall, and you can just add any shape. Okay, so suppose I want to add any odd shape as per my requirement, like that. Okay, so I will just delete this line. Then you can just add whatever you want to add, like that. I don't want to give here, just trim here. So to trim this, suppose I want to extrude this in vertical direction. So if you go here, so you can see this shape, you can extrude this, right? So you can use the extrusion command if you want to extrude some shape in horizontal direction or vertical direction. Okay, so first of all you need to set your right family. So if you want to extrude beam, so you need to use the structural framing. If you want to extrude column, you need to use the structural column.
Okay, so slab. Then if you want to add a floor slab, so you need to choose the category floor category. Okay, so if you go again and say model in place, and I will just choose the floor category, just tentative, and select here OK, and say floor one OK. The next option is blend. So you can see this video. So if you want to blend some shape, means your bottom shape is small or big, and above shape is small. Okay, so you can use this. So in our structural drawings, so if you add something steel column, right? So suppose this is my I section, right? So suppose this is my I section here, right? And I want to add the base plate here. So I have add the base plate, right? And after that, I want to add the grout also. So suppose this is my grout, right? So this is grout. So if I cut a section, so how it looks. So this is my column, right? And this is the web here, dotted line. Then after that, we need to show the plate, base plate, and we need to show the grout. So we need to add this base plate by using the extrusion command, and we need to add this grout by using the blend command. Okay, so let's start. So for example, okay, I will just escape this and go to here ground floor, and I want to add one column here. So go to the structural column, and I want to add the steel column. Let's see if there is any steel column. Yes, so I want to add this. You see 356, 368 by 129, right? So this is my column, right? And if I check here, so column is start from ground floor to first floor, right? So we are at a ground floor now. So if you look at, this is your column. So I want to add the base plate. So what is the base plate size you need to fix? So 356 this dimension, and this will be 369. So what I do, I will just add the reference line here, or you can just a detail line. So type DL, then add a rectangle from this point to this point. So I want to add the base plate here. So minimum we need to give 10 mm for the welding. Okay, so right click again and say create similar, and use the pick line option, and I want to add 10 here. So my actual base plate size should be this one. Okay, and then you can just delete this detail line previously you have drawn. So let's see what is the size. So 389 by 376. So you can just round off here. So what I do, I will just move by zero point 0.5 mm, and this is also zero point 0.5 mm. So it's around 380, sorry, 390, and this is 376. So you can just move by 2 mm both side. So I will get the round figure 380. Okay, so this is my base plate. So I want to add the base plate. Okay, so you need to go structural, then component, then model in place. Then you need to search structural, which family you need to use. So you have option here, structural framing. So you can use this, or structural connection. So base plate connection is also comes in connection. So you can use this, okay, connection, and say okay, right? So I will add here 380 by 390, or you can round up 390 by 390. Okay, I will go with that 380 by 390, right? And you can give the base plate, right? And say okay. Then I want to extrude this vertical direction. So I will use this extrusion command. So click on that, and then simply add the rectangle. You have already 2 points from this point and this point, and say okay, right? And finish. So I will just cut the section how it looks.
So I want to add, I will just increase the scale 50 and fine and hidden line. Okay, so I want to check the section. So go to say here view. So you can see the section here. So I will just stretch these levels. Okay, and you need to change this instead of detail. You need to set here fine. Then you can see your column and here hidden line. Right. So my column is start from ground floor to first floor, and this is my base plate. I have previously drawn these. So you need to set this, right? So how to set? So suppose below ground level, it's a 25 thick base plate. Okay, so type RP reference plane, then add here 25. Use this option, pick lines, and then you need to offset this. And simple, you need to give the AL command. So select this line and base plate line. Then this top base plate should be here. So select again this line and select this. Okay, so we have added this base plate, right? So if I measure dimension, so this is my 25 thick. If you look at in 3D view, okay, I will just delete this shape. Okay, so you can see your base plates is looks like. Okay, you can assign the material, same material. So you need to check the material for this column. So select on column and you can see structural material. Which material we have used for column? This one, steel 43 to 75. So just simple copy this material, control C. So select control all and copy. Then you need to assign the same material for this base plate. So select this base plate previously we have created, then select here edit in place, select again your base plate and you have option here by category. So simply paste this material. Oops, sorry, control all and control paste. Then you can see your column material and base plate material looks same, right? Like that. Then suppose I have designed a pin connection here. So there are four what we'll say bolt. So you need to give the holes here, right? So how to, you need to just fix your bolt size first. So type DL and suppose this is my center of the column here, and this also I will just add the center line here, right? So these are all center lines, and I will just check here dimension 195 and here 195, here also 195. So I want to add the bolt here. Okay, so just I will just give here 195 divided by 2, it's 97.5, half half. So just you can just add this, or you can just right click on that line, say create similar, and use the offset and add here 97.5, right? And then you can add this line, then here and then here. So this is our, you need to fix your location of this bolt. So my first bolt is coming here, then second, third and fourth. Then once you done, so you need to just select this base plate again. Oops, so I have select this line, so you can delete this line because we have already added base plate. Okay, so select your base plate here and go to here editing place, then select again and say edit extrusion. You need to edit this. Okay, then simple, you need to add this circle at 4 locations. So click on circle, and then suppose my bolt dia is 25 mm, so 12.5 is radius. Okay, so just select and say copy command CO and paste at all locations. So type again CO on your multiple option here, and then paste and then paste and say okay and finish. So once you done, you need to delete this whatever you have drawn for the reference lines. Oops, don't delete the section, just delete the line. So you can see, if you look at
in 3D view. So we have cut this plate. Okay, like that. So you can see. Then after that, suppose I want to add the grout here. So suppose my grout is 30 mm thick. Okay. So you need to go again in plan. Then go to here structural. Okay. So this uh, column will be raised on floor. So your grout category family should be in floor. So go to again structural, click here component, model in place, search floor. So you can see here floor category. Your grout is concrete part. So you can choose the floor category and say okay. And you can say here 30 thick grout. Okay, thick THK grout. Okay, and say okay. Right. So you are once you set, then you need to click here blend. So you can see what is the purpose for and where we can add this blend. So you can see in this video. So if you want to some give the shape, small size and big size, and you need to extrude in vertical direction or horizontal direction. So you can use this option. Okay. So I will use this blend option. So click on that. So if you see edit top, it means you need to add the your base. Okay, so I will show you. So this line, okay, I will just new. Okay, so I will add this. Right, so suppose this is my grout. So this is your bottom plane and this is your top plane. Right, the same thing here. So you can see top edit, it means you need to add your bottom. Okay, so if you, sorry, yeah, so suppose this is 30 mm thick grout. So this dimension should be 30. Okay, and this dimension is vertical as well as horizontal 30 mm. Okay, from the base plate. So and my base plate is, it looks like, so from 30 mm here and horizontal and vertical 30 mm. This distance is depend on your thickness of the base plate. If you use 25, so this offset should be 25. So my base plate, sorry, my grout is 30 mm. Okay, so top edit, you means you need to edit the bottom. Okay, so give here 30 mm offset and use this option rectangle and select this. So you can see I have given 30. So this corner is 30 from this corner of the base plate, and edge of this magenta square is 30. So if I add this 1 point here and 1 point here, right, so it's 30 mm. So if I measure di, so you can see this is 30 mm and here also 30 mm. Right, so once you add your shape at the bottom, so click on that. So I am adding the top shape now. So click on that. Then top should be your this point and this point, simple. So choose again rectangle, click first point and second point and say complete. Your grout is ready and say finish. If you look at in 3D, so go to view, right? So this is your grout has been added, but you need to set this. So this is my base plate. So below base plate my grout is 30 mm. So type again RP, reference plane, and then use this option pick lines, give 30 mm offset below the base plate. Then simple, this base you need to match here. So type AL. So select this reference line and select this bottom of the base plate. Similarly, select this top of the grout, means bottom of the base plate and top of the grout. It looks like. Okay. Then you need to assign material also. So select and click here edit in place and click here. If you have grout materials, so search here grout, GROUT,
Okay, no grout. Then I will just assign concrete. Let's see any concrete in place. 35. Okay, cast in situ. Okay, I will assign the same material and say finish. Right. And if you look at in your 3D view, so you can see grout has been added here. Right, like that. And then after that, you can, if you want to add below this slab, below this base plate, so go to the structural floor, click floor category, then you can add your slab and say okay. Then if you go again, go to the section, so your slab is exactly placed at the ground level, right? Then suppose my slab exactly at the ground level, so you can move this up. So what is the dimension? So 30 for grout and 25 for base plate. So total 55 you need to increase above. Okay, so select this uh, column, then add here 55. Oops, sorry. Top, sorry, not top offset, base offset 55. So you can see this column is going up. Then simply you can just select both and then give the move command, and you need to just constrain here and click disjoin. Okay, so your ortho will be released here, and then you can add, or you can just, you have already line here, so you can just click on that. So, okay, so I will just move this and click here 55, like that. So if you, so you can see your your slab exactly rest on ground floor. Oops, we are not able to see, just this is your line weight. So click on that, so you can see all the lines in one thickness. If you want to on this, so you can see, so these lines is assign that the thickness of this line for the concrete, for the steel. So I will briefly explain when we will come on 2D drawings. So what is the, how can set this different line thickness, okay, for concrete, for steel. Okay, so you can see, if you look at in 3D view, your column it looks like. Okay, so you can extrude this shape also, horizontal and vertical. Then if you go again, model in place and say floor and say okay. So next option is revolve. So you can see how to use this. So if you have some shape and if you want to rotate in 360-degree, okay, so in vertical or horizontal direction, so you have option here. So for example, if you see in water treatment plant, there are some inlet work structure, right? So they are looking like that. Okay, so this is your wall, this is your slab, and this is your wall also, and this is your slab, right, like that. Then this is again slope, and then this one. So this type of structure we can't 3D, we can't create the 3D model because we don't have option. If I want to add the walls, so I can add the walls up to here only, right? And then after that I want to add then again this slab, again this wall. Okay, so it's very difficult. So we have option here. So revolve we have option, by we can create this shape by using the revolve option. So in that case, what we need to do, we need to create half shape only, shape up to here, and we need to add the axis here, and just this axis is rotate this shape in 360-degree. So let's see how to add this type of structure. Okay, so first of all, you need to go structural, then component, then model in place. And what I do, here is the combination of wall and slab. So what I do, I will use the slab, sorry, walls. You can choose any category, floor or walls, and say okay.
Then you can see here, suppose I will to add here inlet works uh, grid chamber, right? And say okay. Then you need to use this revolve option, right? Then you need to, suppose I want to add here, right? So you need to set this plane. Okay, so click here set, and click here pick a plane, and okay. So you need to select this plane. My structure is in looking in this direction. Okay, so click here, right? And after that you need to set the same elevation here, right? Like that. Then after that, by using this boundary line, you have all the features, so you can create your shape. So for example, I want to add here, suppose I want to start here my structure. Suppose wall thickness is 500. Then my wall height is suppose 4 meter or 3.5 meter. Then this slope is 45 degree, 50, 60, whatever you can choose angle here. So 40, 50. Okay, I want to go with 60 degree. Okay, and this direction, this dimension is 3.5 also, 61 degree, like that, right? And go again, just 4 meter height below. Oops, 4 meter is very high. Okay, and after that, my put footing, or you can say base slab toe is 300 mm. Oops, sorry, just delete this line and complete your shape. And suppose this toe is 500. My slab thickness below base slab thickness is also 500, right? And you can just leave it here, right? And you need to complete this shape again. So this is my outer face of the structure. Then you need to add again here, right? And then this slab thickness is also whatever you have taken for the wall, 500, and this is also 500. So I will use this option pick line and add here 500. So this is 500. You can just trim this. Then from here, this is also 500. So add here 500. Then complete. Then after that, you need to decide what is your diameter. Diameter from here or here. So you need to fix, first of all, you need to set this. What is the diameter? Suppose this is X and this is Y, right? So suppose I want to give here 4 meter radius, mean 2 meter diameter here, from here. So you need to close this first. So I will just add here 2 meter, right? Up to here. And then you need to close this shape. So this is your center point, right? So once you done your shape, okay, so I have complete this shape. So by using this boundary line, so you need to just click here, axis line, right? So where you want to give the axis line. So click on that, and my axis line is from here to here. So this is my center of this structure. And say once you add here, so say okay, right? So you can see, I will just move this. Okay, so finish. And what I do, I will just move this structure. So give the move command and click here. So you can see I have add this shape. So this shape I can't create by using the wall, slab, different command. So I will use this option, revolve option. Similarly, if you click here, edit in place, select this, and then assign your material, cast in place, gray, and finish, right? Like that. So if you go again, ground floor, where, yeah, this is our, then add here reference plane exactly at the center. So this is your one reference plane, right? And this is your second vertical. So right click and you have option override, so you can choose center, right? Like that. And then after that you can extend here. Then you can add a section exactly at the center. Then this forward distance, so
let's see how it looks. So if you say go to view, so you can see this part is your forward distance. So you can set this 0. So click here, and instead of this, I will set 1 here. Then if you go to view, so your structure looks like so, right? Then you can give the dimension. Okay, so this shape is revolve in 360 degree. That's the reason they can't take this line. So in that case, you can just add the reference plane here, one here, then one here, then here also, and here also. Then you can show the dimension, type di, then give the dimension. So this is your dimension, and this is your dimension. So this is your 4 meter, and this is 10 meters something, because we need to give some values here, round of value. So if you measure this, so this is odd 3061. That's the reason this value is getting odd. Then you can give the dimension for this wall height. Then you can give again this wall height also, then this height, this dimension you can give. Then you can give this dimension. Suppose you have already given here one dimension. If you want to give the, or if you want to continue this dimension, so select this dimension. Once you select, so modify dimension is active. So click here, edit witness lines, and you can just continue your dimension. Oops, select and choose this reference line, right? So like that, complete. If you want to show the wall thickness also, again select, this is 500, right? Like that. And similarly you can give the also here 300 mm, sorry, 500 mm. Okay, so you can use this option. So you can see, sometimes if you want to add some dome structure, right? So suppose if you want to add this type of dome structure, okay, so you can use this option again. So go again, set your plane, and go again structural component, model in place. I will choose the floor category, okay, and say okay. And you can give any name, or you can say continue. So before going that, you need to choose this revolve. Okay, but you are not able to draw here. Why? Because you haven't set the plane. So you need to set the plane first. So click here, set, and click here, pick a plane, and say okay. Suppose I want to create in this direction. So you can choose this column face, any column face, right? And then you can add your dome structure. So suppose I want to add here. So this is my start point, and this is my end point. So 6 meter, and suppose the radius 3 meter, right? Like that. Then just for reference, I will add a vertical lines, and you can use the trim command. So you can trim this shape, and suppose your slab thickness is 150 mm. So click on that, pick plane, add here 150, like that. And then you can just give any shape as per your requirement. Suppose I want to add this shape, this type of shape, or if you want to add some sort of curve part here also, like that, right? You can just delete this, okay, and you can use the offset command again. And what is 150 thick, sorry, not 15, it's 150, okay, like that. Then you need to complete this shape, trim command. Then you need to again give the trim command, right? And you need to add below, and just complete this shape. Okay, so your shape is complete. So simple. Click here, axis line, and suppose this is my axis line. So click here and here, and say complete, right? And you can just assign again material, or if you want to, suppose this is your glass, you can assign any material. So click on that, click,
and say search glass here, or you can say and say okay, right, and finish. So you can see we have added this shape, right? Suppose if you want to change material, click again, select, and click here, select again, and where is the material? Oops, select, we just extend. Okay, where is the and click material? Oh, yeah, here instead of glass I want to add cast in place gray and okay, and finish. So you can see, right? So if you, as per your requirement, if you want to create odd shape like and rotate in 360-degree, so you can use this option. Which option? Suppose I will choose the floor category, so this option, revolve option. Okay, then next is sweep. So you can see, if I if once you see this video, so you can get the idea what is the purpose for that, right? So if you have a path and if you want to extrude some shape in that path, along with that path, so you can use this. So latest example we will take. Okay, so here, right here, so this shape I want to create in all direction, right? So suppose I will delete this and I want to add this shape in all four direction. So how to do it? So you need to go again, structural, component, model in place. You need to choose the wall category because we are adding this shape on wall. So click here, okay. Then you can give the any specific name as per your requirement. I will give wall one and say okay. Then you need to click here, sweep, right? Click on that, and you have two options. One is pick path and one is sketch path. So we don't need to add a sketch path, we have already path here. So click on that pick path, right, and I will choose this path, outer face of the wall. You can choose inner face also, and just complete and enclose these paths by using the trim command, right? So if I select, right, so give the trim command and finish. So you can see we have complete this shape. So if I on this, so you can see, then after that, once you create, so you can see this ortho is added here. So by using here x and y, you can add your shape. So once you complete your path, so click here, right, and click here, edit profile. I want to add the profile here. So click on that, and we have already cut section. So press Control Tab, then you need to reach that section. Yes, here. So we have already cut the section through this chamber. So you can see this X and Y here. So on the basis of that, you can add your shape. So suppose my here the height is 500 mm to here. You can give 500 inputs, right? And then you can add here this curve, and you can choose radius as per that. Okay, I will just round it 320. Okay, and then delete this line, and I want to just mirror this in opposite direction here, right, like that. You need to close this shape. If you want to edit, or if you want to add some another as per your requirement, suppose I want to add again this type of, right, and this type, or you can just mirror in opposite direction like that, and then you can delete this and you can trim this shape like that. Okay, and then complete, your shape is added here, and finish. If you look at in 3D view, so you can see your shape is looks like. Okay,
So you can see. Okay, then you need to just assign the same material. So select again and assign the material here and say okay and finish. So yes, your shape is looks like. If you want to change this, so go again. You can edit this. So click here, edit in place. Click again and click here, edit sweep, and you need to select this profile and say edit profile. Suppose I don't want to add this. I don't want to. I don't just. I want to just close here like that. Then trim and say complete. Okay. Then finish. And if you look at in 3D view, so you can see it looks like. So it's a part of this wall, right? Then again, suppose if you want to add something different shape, so click again and edit, and then click here and say edit profile. And suppose if you want to add something like that, so click again and you need to give first point, then second point, and third point, right? And then you can just trim this, okay? And you need to just mirror exactly inner side like that. Again, give the trim command, and then you need to complete this shape. So complete like that, okay? And complete here. And if you look at in 3D view, so you can see your shape is looks like, okay? So you can create as per your requirement whatever shape is you want to create. You can use this option, structural component, then floor, say okay, say okay again. So you can see we have sweep option, right? Then you can suppose if you want to add something, some shape along with the periphery of the building, this type of shape, so you can give the path for this outer face of the building, right? And then you can add this type of shape like that, okay? Then next is swept blend. So you can see, so suppose if you want to extrude small shape to long shape, big shape, or any square to trapezoidal, so you can use this option. But mostly in structural point of view we are not using this, but just for your information I will just add one example here. Okay, so if you go again structural and component and model in place, right? Then you need to choose floor category, say here okay, and you can select here swept. So you have option here first of all, right? So if you have path, so you can use this path. If you want to give some sketch path, so suppose I want to give the sketch path, right? So I want to give from this point to this point, right? So press shift so you can lock this, right, up to here. Then once you given this path, so you have option to profile one, profile two. So this is your profile one and this is your profile two. Select on profile one, right? Profile one and see edit profile. So you can add your profile. So suppose I want to add this shape. So this is my rectangle 900 by 900, right? So first profile is done. So click here okay. Then second profile, and suppose I want to extrude this to big shape, so click again edit type, use this rectangle, and I want to extrude here big one. So suppose this is 3 meter and this is also 3 meter, right? And say okay and finish. So you can see your shape has been added here. Similarly, you can choose the vertical direction also. Okay, so suppose if you want to add some, what we'll say, this type of
pole, electric pole or street light pole. So you have option here, right? Similarly, you can add the vertical direction. Then if you go again, structural and say component, then floor category, say okay, right? Then we have, these are all adding features here, and here is subtracting. So if you want to subtract some part, right? So just for, I will just add this example here. So just, where is that? I have added, okay. Yeah, okay. So on this slab, suppose I want to, what is the thickness for this? I will, okay, I will cut the section there. So go to the ground floor, and this is my slab, and say go to view, right? So I want to add some, what we'll say, strange here. Just drain out the water here. Okay. So I want to just take a snap. Sorry, new, and here. Okay. So this is 300, and I want to add here one trench through this slab, 100 by 100, and from the edge of the slab edge is 3 meter, and this is 150 by 150 or 100 by 100. Okay. So how to add? Let's see. So before adding, so you need to check this. What is the category? Floor category. Then you need to use this component, click here model in place. You need to choose the floor category because this is floor category, right? So select here, and I will add here 100 by 100 trench, right? And say okay, right? And then you need to use this void option and say void extrusion, right? I want to add the trench in this direction. So you need to set the plan. So click here, set, and say pick plan, and say okay. So you need to set this plan because my trench is going in this direction. So select this. You have already cut section. If you not cut, so you need to just add a section. So you are ready to add your trench here. So my trench is 3 meters. So I will use this pick line option, and I will add here 3 meter. So there is 3 meters. Oops, 3 meter is very big. It's going up to here. Okay, I will just add here one line, and then just move. Okay, suppose 1 meter. So 1 meter comes here, right? And suppose the depth is 100 mm below this slab. So you can see this is 100 mm. And then again, you need to just copy this by 100 mm, right? And then trim this, right? And you need to complete this shape, right? Trim, then trim, right? And come, say here okay. If you look at in 3D view, so you can see this shape is ready to cut through this slab. So once your shape is ready, so click here cut. So click on that cut. So select your whole slab and select those part you want to cut, right? You can see, right? So if you select, so you can see. If I say finish, so you can see we can't edit this, but I want to modify this. So go to the plan view. So I want to add this trench up to here, right? So click on that and say edit in place. Select your shape, and you can just align this. So type AL, and suppose I want to give up to here. So you can just align this. So type AL, select your this line. Oops, sorry. Select this and say edit extrusion, or you have option here. Just stretch this. Okay, like that. And if you complete this and look at it in 3D view, it looks like, right? Then
Similarly, you can add here also. Okay, so exactly opposite whatever you did here. Okay, so if you go here and say, so this is extrusion for adding and this is extrusion for subtracting. So if you see the video, you can get the idea. So this is concrete block, and if I want to cut some part, so you have option here like that. So you can deduct this part. Okay, same thing wide blend. So if you want to subtract some shape from top to bottom, it looks like. Then revolve. Okay, so if you want to revolve in 360-degree, cut to the 360 degrees, so you can see. So you need to just add a shape and subtract it. Then void. Okay, so if you want to cut some shape all around, so you can you can use this option. So suppose I want to just give this all periphery, this range. So how to give? Okay, so I will delete this and then go again component, then oops, sorry, click on structural component, model in place, then floor category, and say okay, and say okay here. If you want to give the name, so you can give, and go here and use this option, void sweep. So click on that. Same thing, you need to assign first path. Okay, so I will assign this path, then this one, and then this one, and then this one. Okay, and say complete. So you are ready to add your shape. So go to section. So we have already cut section through this slab. So just control tab. So yes, here. Okay, so we are adding here shape. So click here, edit profile. So just from here, our trench is 1 meter. So I will just move this wall by 1 meter, 1 meter from edge of the concrete. Then you need to give, suppose my trench depth is 150. So you can add the 150 below and trim this, and then copy again and say 150 and say trim, and then close this shape. So you need to just more, you need to just give from this top of the concrete some more part here, because it's perfectly cut here. Okay, so this shape I want to cut here, that's the reason I have just extend this shape. Okay, so if you look at in 3D view, so your shape is ready. Okay, and then complete, and then if you click here finish, so you can see this shape is highlight. Then simply you need to click here cut. So cut your total slab minus this slab, right? So you can see we have added this and complete, right? So there, if you saw in sump here, so concrete sump. So for example, I want to add here some sump here. So this is my slab and this sump. Okay, like that. So for adding this, and we are covered this sump with grating here. So you have two options. One is just add the member here for support this grating, or you have, or you need to add the notch here like that. So in that notch you can use the sweep option, and this, suppose this is X and Y, and this shape you need to deduct from this wall, right? So you can add the notch here. Okay, so suppose I will just go to again ground floor, and suppose this is my some wall, or okay, I have added already here. Yes, so here, right? So here we have added some here, and I don't add any wall below, because on this part I want to add the grating. So I want to add the notch here.
So first of all, check again category, floor category, go to the structural component and say model in place, use the floor category. Click here. You can give, suppose notch size is 50 by 50 right? And say okay. Use this sweep option, right? Then you need to give path first. So my notch is running in this direction and say complete. Then you can add this shape here also in 3D also. So go again and say edit type, right? So how much this 50 I will opt this line width, right? And below also 50 and you need to add this square 50 by 50 okay, and this also 50 okay. You need to just trim this, right? And say okay, and you need to click again. Okay, so you can see this shape is ready to cut, right? So you need to go here, cut again. So choose, select first this whole slab and this deduct slab, right? So you can see, but some part is not properly cut because our shape is just match the top of the slab. That's the reason. So you need to just extend this shape. So click here, go to here and click on that shape and say edit profile. Then you need to extend this in this direction and in this direction and then complete and say finish and say finish. So you can see we have added the notch here. So if I cut a section in this notch, okay, so if I go to view, so you can see your notch is, I think my line alignment is not right. So if my shape is not correctly, actually, okay, I will check here. So click here and so click here, edit in place and say edit sweep, and you need to choose this or you need to select this shape, right? And you need to go here, edit profile, and you can just modify. Okay, so I have added in wrong another direction sections. Okay, so you need to go and then set the front, right? And you need to add your shape. Yeah, this shape. So this is this should be like that, and then trim and then trim and say okay and finish. Then if you look at in section, so you can see. So if I measure, so this is 50 by 50. Yeah, it's 1 Yeah, it's a 50. Then you can cover this by using any grating or any checker plate. Okay, as per your requirement. Okay, so if you go again, model in place, floor category. So if you want to add some different shape, so you can use this option, or if you want to subtract some shape from your existing shape, so you can use this option. So practice on that. So this is the simple thing. Once you done this, so you can easily done this. So practice on that, and if you stuck anywhere, so you can share with me your doubts or query. So this part is uh, done. So then next is component done. Then tomorrow we will see steel structure. So we will take a one example Sir, fabrication. stair. Yes, yes, stair. Yes, okay, okay. So tomorrow we will cover first ramp and stair and railing. Okay, yeah, and roof also. So if you want to add some sloping roof, so you have option here. So tomorrow we will see how to add the sloping roof.
एंड देन मूलियन क्या होता है सर? मूलियन सीलिंग। ये ग्रेड। मूलियन मूलियन आर्किटेक्चर का पार्ट है, वो अपना स्ट्रक्चरल पार्ट नहीं है। प्लस सीलिंग ऑल्सो। यस, फॉल सीलिंग, दिस इज फॉल सीलिंग। सो ये भी स्ट्रक्चरल का पार्ट नहीं है, ये आर्किटेक्ट का पार्ट है, लेकिन आपको अगर डालना है, सो ये जस्ट स्लैब का ही पार्ट है। अगर आपको फॉल सीलिंग डालना है तो ये आप एक लेवल सेट करिए और स्लैब जैसे डालते हैं वैसे ही उसको डालने का है। सो ये मेन स्टेयर, मेन डिवाइस। स्टेयर्स पर स्टेयर, डिफरेंट टाइप के स्टेयर्स। यस यस, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का स्टेयर्स है। सो यहाँ पे आप सिंपल स्टेयर है, ये स्टेयर, ये स्ट्रेट स्टेयर से आप डॉग लेग स्टेयर भी ऐड कर सकते हैं। सपोज इफ यू वांट टू ऐड सर्कुलर stair, so you have option here. So these are different stair, but mostly we are using this straight stair, and we can just continue this. Suppose if you want to add some stair first, ground to first floor with dog leg, so you have option. So tomorrow I will explain how to draw this. Then ओके first, सर। yeah, first of all we will see roof. So is the most important part architecturally. So some commands not in structural, so we are using the structural for completing those command by using the structural tab. For example, window you can add, door you can add, then we have separate option for this. So today we saw this. Then column, here we have also column, then roof. So if we want to add the slope roof, okay, so in structural tab there is no option for the slope roof, so we will use this option. Then these are all structure architecture related commands. Then we will see the most important railing, then ramp, then stair. So those things we will cover in this architectural tab. So once those done, so we will start our steel part, fabrication building. So I think we should stop for today. So if you have any question, any doubts, so you can ask. So सर I इसमें इस हम्म, रेनफोर्समेंट भी शो कर सकते हैं क्या कॉलम बीम में? कर सकते हैं ना। आपको 2D प्रेजेंटेशन यानी कि 2D में खाली दिखाना है या 3D में भी डालना है, तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास। जी जी जी, दोनों एक बार आइडिया देंगे तो सही रहेगा। यस यस, सो ये हम कैसे वन एक एक करके देखेंगे। अगर आप हमारा स्टील का स्ट्रक्चर हो गया ना, तो स्टील स्ट्रक्चर हम उसको 2D में सेट करेंगे। सो 2D में सेट करेंगे, उसमें डिटेल भी ऐड करेंगे, उसमें रेनफोर्समेंट जस्ट स्कीमेटिक कैसे देते हैं वो देखेंगे 2D में, और जी। उसमें हम 3D में भी दे सकते हैं, सो वो भी देखेंगे हम। ठीक है। ओके सर, ओके सर। और सर इसमें जो कॉलम हम लोग असाइन करते हैं हम्म। सेंटर लाइन पे, वो एक साथ कैसे करते हैं वो समझ में नहीं आ रहा था, एक बार क्या दिखा ओके, एक साथ मॉडिफाई करना है ना आपको, मॉडिफाई सकते? करना है ना, नहीं, जैसे एक साथ एक सिलेक्ट इंडिविजुअल करना को है। नहीं प्लेस करते हैं जब सर, ओके ओके सेंटर लाइन पे जब ग्रिड लाइन पे जब प्लेस करते हैं, तो वो आप एक साथ कैसे सेलेक्ट करके कर दें? ओके ओके ओके, यस यस। तो ये देखो, अभी मैं सपोज ग्रिड लाइन है ये मेरी, ठीक है। सो ओके, मैं एक यहाँ पे ग्रिड्स डालता हूँ अलग से। सो ये सपोज ये ग्रिड है, ये दूसरी ग्रिड है, ये तीसरी ग्रिड है, ये चौथी, पांचवी और ये छठी। सो मुझे ना यहाँ पे एक ही क्लिक में कॉलम डालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, स्ट्रक्चरल में जाऊंगा, कॉलम में जाऊंगा, और ये ऑप्शन यूज करूंगा, ऐड ग्रिड्स। ठीक है। सो इस पे क्लिक करके आपको क्रॉस विंडो क्रिएट करना है यहाँ पे, और सभी ग्रिड्स को आपको सिलेक्ट करना है। सो ये देखो, ये कॉलम आ गया आपके। ठीक है। सो ये कॉलम दिखने लगे, तो यहाँ पे करने का फिनिश एंड एस्केप। सो आप एक ही कमांड में सब कॉलम ऐड करेंगे। अगर ये आपको कॉन्क्रीट कॉलम चाहिए, सिलेक्ट करो सबको और कॉन्क्रीट में कन्वर्ट कर दो, तो ये कॉन्क्रीट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। एक चीज और सर, हम लोग का जो ये कंक्रीट कॉलम है वो स्ट्रक्चर वाले में नहीं आ रहा है क्या? स्ट्रक्चर वाले में नहीं आ रहा है मतलब? मतलब जैसे स्ट्रक्चर पे आपने क्लिक किया, मुझे कॉलम पे जाएंगे अगर सर हम ये लोग, है ना यहाँ पे कॉलम। इस पे कॉलम पे क्लिक किया, देन सर हम लोग का सिर्फ स्टील स्ट्रक्चर आ रहा अच्छा था। अच्छा, ये कंक्रीट का नहीं है क्या?
कंक्रीट का उसमें अगर हम अटैच करते हैं तो वो कुछ ब्लिंक करता है। मैं आप ये देखो, ये क्या करो, इंसर्ट में जाओ, लोड फैमिली में जाओ, और यहाँ पे स्ट्रक्चरल कॉलम का एक सेपरेट कैटेगरी फोल्डर है, स्ट्रक्चरल कॉलम में जाओ, यहाँ पे कंक्रीट सिलेक्ट करो। फिर अच्छा यहाँ पे आपको सपोज अभी ये कॉलम मुझे लोड करना है, तो इसको सिंपली लोड कर लो, तो लोड हो जाएगा। वापस आप स्ट्रक्चर में गए ना, तो आपने जो लोड किया हुआ कॉलम है ना, वो यहाँ पे दिखेगा। ये देखो, ये अभी ये कैसे आ गया, कॉलम विथ, ये क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉप पैनल के साथ आ गया हूँ। ड्रॉप के साथ में हो गया। हम्म। सो ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप 3D में देखोगे, किधर गया, देखो ये आ गया। ठीक है। ओके सर, हम कोई भी सर मैं कॉलम ये मतलब पूछ रहा प्लेस हूँ करेंगे तो रूफ। वो स्ट्रक्चर का ही कॉलम प्लेस करेंगे, आर्किटेक्चर से मतलब नहीं है। नहीं नहीं, अगर आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग कर रहे हैं तो आप स्ट्रक्चर का ही लो। अगर जिसमें आपको स्ट्रक्चर में नहीं है तो आप वो आर्किटेक्चर में दो। फॉर एग्जांपल, स्टेयर नहीं है स्ट्रक्चर में, रैंप नहीं है, उसके बाद रेलिंग नहीं है, उसके बाद स्लोप रूफ नहीं है, तो हम आर्किटेक्चर के यूज करेंगे। ओके सर। सर मैंने ये किया है बट इसमें रूफ और बीम जो ज्वाइन होते हैं वो हो नहीं पा रहा है एक्चुअली। अच्छा, स्लैब और बीम। जी जी सर। सो वो क्या है, आपने सेम मटेरियल असाइन नहीं किया होगा। ठीक है। नहीं सर मैंने अच्छा वो कंक्रीट आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. अभी ये देखो, ये मैंने सेक्शन लिया, सो यहाँ पे मैंने गो टू व्यू किया। सो आपके केस में क्या होगा, इसका मटेरियल अलग होगा और इसका मटेरियल अलग होगा। सो ये आप ओपन करो स्लैब, नहीं तो, और इसका मटेरियल चेक करो, ये कौन सा मटेरियल है। ये है कास्ट इन प्लेस ग्रे। सो इसको कॉपी करके ये बीम को भी वही सेम मटेरियल असाइन करो। तो यहाँ पे अगर देखो आप, स्ट्रक्चरल मटेरियल यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद भी नहीं होता है, तो ये व्यू चेंज करो, ये फाइन करो, और ये हिडन लाइन करो, तो ये हो जाएगा। ठीक है। और सर ऊपर पैरापेट जोड़ने के लिए हमें वॉल आर्किटेक्चर से ही लेना पड़ेगा कौन सा पैरापेट का वॉल? रूफ के टॉप पे अगर मैं पैरापेट ऐड करना चाह रहा हूँ तो वो आर्किटेक्चर से वॉल लेना पड़ेगा ना। नहीं ना, नहीं नहीं, आप ना कंक्रीट का ही वॉल लो ना। आपको अगर ब्रिक वॉल चाहिए तो ब्रिक वॉल लो। यहाँ पे आप अगर सपोज मुझे ये लेवल पे, पैरापेट लेवल पे करना है, सो जी मेरे पास ऑप्शन है ना। यहाँ पे अगर मैं गया तो मेरे पास है कंक्रीट वॉल है, ब्रिक वॉल है, ग्लास वॉल है, तो आप स्ट्रक्चर का ही ले लो। आर्किटेक्चर का गए ना आप, तो आर्किटेक्चर में ये अलग अलग कैटेगरी की वॉल्स है। तुम वहाँ पे उन्होंने कैविटी वॉल्स वगैरह, ये देखो ये क्रिएट किए हैं। यानी ये जो जनरिक है ये अपने पास भी है, तो अपना स्ट्रक्चर का ही यूज करो। अच्छा ठीक है। ठीक है सर। ये मतलब क्या है कि आप अगर स्ट्रक्चर में जो भी फैमिली है वो यूज करेंगे, और आप जब येलो ही निकालेंगे अपना टेक ऑफ क्वांटिटी जी जी कंक्रीट सर। का, तो अगर आपका स्ट्रक्चरल का सभी स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, तो आपका टेक ऑफ एक आएगा। नहीं तो फिर वो असाइन करते हैं बैठेगा, आर्किटेक्चर का भी रह जाएगा, फिर ऐसा है। ठीक है। ठीक है सर। इसमें क्वांटिटी भी निकल जाता है सर। क्वांटिटी निकल जाता है सर इसमें। ओके। कंक्रीट का, स्टील का, आपको क्यूबिक मीटर में मिल जाता है पूरा। ओके सर। ये देखो, ये अगर मैंने सिलेक्ट किया ना, तो ये यहाँ पे वॉल्यूम आ गया है आपका। लेकिन आप इसमें टेबुलर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। एक ही साथ सारा निकाल सकते हैं। एक ही साथ असाइन करके निकाल सकते हैं आप। वो शेड्यूलिंग में आता है ये। अगर यहाँ पे गए ना, तो ये हमारा एक ऑप्शन है शेड्यूल है। सो यहाँ पे हमें मटेरियल टेकअप निकाल सकते हैं उसका। ये वो आप आगे देखेंगे। कवर करेंगे ना सर। यस यस, ये शेड्यूलिंग में स्टील में कवर करूंगा। उस टाइम मैं आपको कैसे टेक ऑफ निकालते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है। सर इसमें अभी जैसे अभी हम कर रहे हैं तो ये देखिए सर इस तरीके से आ रहा है। एक मिनट सर मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये ऐसा सर आ रहा है, तो इससे कोई ये कैसे इसको ओवर राइट कर दें क्या सर? क्या आ रहा है वो, ये क्या है मैंने मैसेज? फैमिली लोड की सर, तो लिखे आ रहा है ओवर राइट द एग्जिस्टिंग वर्जन। हाँ, इसका मतलब वो जो फैमिली है ऑलरेडी लोडेड है आपके यहाँ पे। अच्छा तो वो बोल रहा है कि उसको मैं ओवर राइड करूँ क्या, तो ये यस कर दो। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। सो आई होप्स एवरीवन डूइंग द प्रैक्टिस।
सो सबका सॉफ्टवेयर का इशू भी सॉल्व हो गया है ना अभी? यस सर, यस सर। इसमें हो सर गया है। अलग अलग डाय का अलग अलग सरिया उसमें शेड्यूलिंग में बना निकाल सकते हैं ना, क्या? अलग अलग डायमीटर का अलग अलग रेनफोर्समेंट, वो मतलब जो कि रेनफोर्समेंट है ना, वो डिटेलिंग का पार्ट है। वो यहाँ पे नहीं आता। अगर वो करना है आपको तो वो अलग से एक एड इन लेना पड़ता है। अगर आप यूएस पे काम कर रहे हो तो यूएस के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो परचेस करना पड़ता है। वो थोड़ा एडवांस है, तो उसमें आप बार बेंडिंग शेड्यूल निकाल सकते हैं। ओके यस, वो थोड़ा एडवांस फीचर है। अगर आप कौन से भी एमएनसी में गए, सपोज एक आधा कंपनी वो यूके के लिए काम करता है, तो वो लोग क्लाइंट क्या करता है, वो परचेस करता है ऑटोडेस्क से। सो यूके का काम इसमें चलता है, ब्रिटिश कोड 8666। तो उनके शेप भी अलग रहते हैं, वो परचेस करना पड़ता है। सिमिलरली इंडियन स्टैंडर्ड को भी परचेस करना पड़ता है ऑटोडेस्क ने। इन्होंने बना के रखी है, लेकिन वो थोड़ा एडवांस फीचर है। सो हम अभी फिलहाल बेसिक ही देख रहे हैं। ओके सर। तो इसमें अभी आ रहा है Revit cannot load the following files M rectangular column। क्यों? ऑलरेडी होगा फिर वो आके। कैसे सर इसको सर्च फाइंड कैसे करेंगे किनारे से? वो देखो ना, कॉलम कैटेगरी में जाके अगर वहां पे कॉलम है तो ऑलरेडी कॉलम लोड किया है आपने। तो कट किया मैंने सर, कॉलम में स्ट्रक्चर में गया, कॉलम में गया तो ये सिर्फ उसका स्टील का ही दिखा रहा है सर ये तो। नीचे होगा, देखो आगे थोड़ा स्क्रॉल करो। सर मैं एक चीज पूछ अभी रहा था, हम्म, आप पहले उनको बता दीजिए। हाँ, अभी देखो ना, आपके सामने ही मैंने ये लोड किया ना, तो वैसे ही करना है। अगर ये आप सर इतना ही दिखा रहा है बस। ये देखो, यहाँ पे एक लोड फैमिली का ऑप्शन आया ना, तो यहाँ पे लोड, यहाँ पे क्लिक करो लोड फैमिली में। ठीक है सर। और वहाँ पे स्ट्रक्चरल कॉलम में चले जाओ। यहाँ पे देखो, ये ऐसे स्ट्रक्चरल कॉलम। हाँ फिर वहाँ पे कंक्रीट कॉलम में जाओ। फिर ओके। यहाँ से उठा लो एक रेक्टेंगल और स्क्वायर का, ओपन करो उसको। यहाँ से अच्छा ठीक है, मैं करके देखता हूँ फिर। अगर नहीं हुआ ना तो रेविट बंद करो, ये थोड़ी देर बाद चालू करो। ठीक है वो ठीक भी सॉफ्टवेयर इशू होगा। है। ठीक है सर। सर मैं ये कह रहा हूँ, अगर आउटर कॉलम पे हम ऑफसेट दे करके कुछ ऑफसेट लेते हैं और उसमें स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग करना चाह रहे हैं, तो वो कुछ आप बता सकते हैं कैसे क्या होगा? क्या क्या? आउटर कॉलम पे सर हमने ऑफसेट ले लिया है हाँ 100 mm का, और उस पे हम हाँ। स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग देना चाह रहे हैं। स्ट्रक्चरल क्या? ब्रेजिंग? ग्लेजिंग ग्लेजिंग। ग्लेजिंग जी सर। कॉलम पे? जी, आउटर स्पेस पे। हाँ, तो तो वो ठीक क्या है। पूरा, मतलब एक इंडिविजुअल उस पे पैनल पे लेना पड़ेगा या कैसे क्या करना पड़ेगा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। अभी ये आउटर कॉलम है हमारा, और आपको ग्लेजिंग बनाना है ना। हाँ सर, बट इसमें ऑफसेट होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जैसे आप वाले में ऑफसेट लिया नहीं है मैं। ऑफसेट क्यों लेना है? लेकिन आउटर फेस में तो मैच होगा ना, ऑफसेट अंदर आएगा ना। नहीं सर, मैं बाहर देना चाह रहा हूँ ग्लेजिंग जो है ये डिजाइन आउटर के को। हिसाब से पूछ रहे हैं कि अगर कुछ डिजाइन देना हो तो। एक मिनट, एक मिनट, मैं बताता हूँ। सो सपोज ये मेरा कॉलम है, ठीक है, और ये जी आउटर फेस में ऐसा खटकी है, बराबर। जी सर। और आपको यहाँ पे ग्लेजिंग देना है ये पार्ट में। जी जी सर। जी सर। यहाँ पे ये जी ग्लेजिंग है सर। आपका, ऐसा। जी जी जी। जी सर। हाँ ठीक है ना, फिर ये वॉल फैमिली यूज करो और इसको है ना ग्लेजिंग का मटेरियल असाइन करो, हो गया। आएगा ध्यान में। सपोज ये आपका एक कॉलम है ऐसा, जी जी ये कॉलम है ये ऐसा, ये दूसरा कॉलम इधर ऐसा। जी। तो क्या करो, ये लेवल पे वॉल डाल दो। यहाँ पे एक लेवल मार्क करो, वो लेवल यहाँ पे एक ऐसा वॉल डाल दो। तो ये वॉल, ये कॉलम से ये कॉलम आएगी ऐसे ग्लेजिंग वाली। उसका जो थिकनेस है वो स्पेसिफिक के हिसाब से दे दो, कुछ ना ग्लेजिंग रहता है, हो गया कंप्लीट। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। मैं ट्राई, अगर नहीं हुआ तो मैं आपसे बात हम्म। अभी करूंगा सर, हेलो। फिर मैं
आपको बताऊंगा जैसा भी होगा। अच्छा ठीक है, चलेगा। ठीक है सर, ओके, ऑल गुड। थैंक यू, गुड नाइट ऑल। और क्या रहा है साइड का इशू? साइड सर तब में नहीं आगे बात ये है, क्यों? टाइम खत्म है। टाइम खाते हैं कैसे? क्या है क्या ये जो करते हैं? मित्तल है ना, ये बस एक पार्टनर है, मतलब इसने कुछ इन्वेस्ट कर दिया होगा, ऐसे कर दिया 4-5 दिन है। अब मित्तल की ना तो साइड पर चलती है ना तो साइड पर ध्यान देता है, और भी कोई स्टोर पर एकदम वो न्यूट्रल आ गया। अब जो मेन गुस्से करने वाला है वो है फोर्ड वो कुछ। अब वो क्या आ जाए हुआ है, तो पहले तो हम साइट पर देख कर देखा कि ठीक सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई और भी तो नहीं है। कल उसको उसने जहांगीर से कोई फोटो मंगा ली, उसमें क्या ओवरलेप ज्यादा दिया होता, लगभग 1 मीटर, मतलब 1 फीट तक भी नहीं होता है। 40 इंटू वो बार होता है ना मोटा मोटा, 48 भी 48 मतलब अच्छा 48 इंटू
हाँ तो लगभग यही है। तो उसने पूछा तो मैंने, हालांकि मैंने पहले देखा था बट मैंने क्या है कि वो सीनियर इंजीनियर है ना, उसके पास गया था, काफी सारे सवाल थे तो उसने भी क्या है कि विशेष ध्यान दिया नहीं। तो मैंने कहा ठीक है आगे से देख लेंगे वो तो क्या है, तो मैंने इग्नोर कर दिया। अब वो उसके तरफ दिमाग में अड़ गई कि यार आप इंजीनियर हो, आप ध्यान नहीं रखते हो इतनी स्थिति पर। अब उस 1 फुट का मान लो उसने 10 जगह और ओवरले जैसा भी होगा, हमारा तो क्या है कि इससे खर्चा बढ़ जाएगा, ये आप यहाँ पर हो तो आप ये तो मतलब है, इसको ध्यान रखना चाहिए। तो पहले तो आप स्पष्ट कर दो ना। तो मेरे को जब मैंने यहाँ आपने अपॉइंट किया, मैं लेकिन उसके बाद में भी 2 सेक्शन थे उसमें ओवरले ज्यादा ही दूर किया नहीं गया। नहीं, हाँ मेरे को अपॉइंट किया तो उसकी कंडीशन, हमारी बात ये हुई थी, उसमें क्या बात है? अपने को इंटरनेट डे जाना है, केवल रिकॉर्ड मेंटेन करना है। नहीं नहीं वो तो संभव नहीं लगता सर, ऐसा केवल रिकॉर्ड मेंटेन करना। वो तो कह रहे हैं साइट पर आपको टेक्निकल जो भी चीजें हैं वो सारी आपको ध्यान रखनी, उनकी तो ये रिक्वायरमेंट है, मित्तल की नहीं, वो कोड की। और फिर वो जब आए तो उसके पास 1-2 घंटे बैठे और एलेक्स उसको और समय दो, कोड वो जब आए गंगानगर का है तो, और हफ्ते में एक बार तो आएगी। और जब कोड बोलेगा उस समय कोई नहीं बोलेगा। आज हेमंत वो जाविंगेड है ना, उसको तो 2 लाइन कर लिया ऐसा वो। हालांकि देखो उसकी भी गलती है, और एक नजर से देखो उसकी गलती भी नहीं, क्योंकि क्या है कि वो बातों बातों मेरे को कई बार कहता है देखो मैं क्या है कि साइड पर यहाँ रहता हूँ तो रोड पे मैं भी को नहीं, मतलब वो उसको क्या मैनेजमेंट सारा उसी को दे रहेगा, लेबर है मटेरियल है जो भी है, तो इनडायरेक्टली उसने कह दिया मैं 2 रुपये इसमें कमाता हूँ। अब क्या है कि उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, भाई तू वाइब्रेटर लाया तो ठीक है, इसमें डीजल डल रहा है तो कितना डलवाया, किस लिए डलवाया, सीमेंट की गाड़ी आई तो उसको लेबर को जो खिंचाई होती है ना, उसको कितना दिया, तो उसने खिंचाई में कोई 7 रुपए लिख दिया, तो ये 7 रुपए कैसे है, तो उसने कहा मेरे को लेबर मिली नहीं ये क्या बात है, 5 रुपए से ज्यादा कोई लेता ही नहीं है। अब कोड का ये एकदम उसने पॉइंट पकड़ लिया कि इससे ज्यादा रेट नहीं होनी चाहिए, वो कह रहा है मेरे को लेबर मिली नहीं, वो कहता है मेरे को ट्रैक्टर के साथ सुनने चाहिए, मतलब मिलती है उससे कम में नहीं मिलती, कोड कहता है 400-500 में मिल जानी चाहिए। तो इससे क्या है कि वो छोटी छोटी बातों वो तो उनका इशू है। नहीं, वो इशू है लेकिन वो उनके उनके टॉपिक पर इशू आएगा, आज नहीं तो कल मेरे पर भी आएगा, और वो कि ये जरूर कहेंगे कि साइड में ये दिक्कत है, और वो दिक्कत सर होनी स्वाभाविक है, क्योंकि मैं तो 24 घंटे रह नहीं सकता। तो अपने को ज्यादा देरी करना नहीं है। 1 तारीख से आज 10 तारीख हो गई है, बीच में दिवाली है, जैसे आराम। बात हो रही है सबसे बड़ी, मेरे 2 तारीख को पेपर है हो रहे हैं, तो तब तक तो ये कहेंगे। बीच में दिवाली है, दिवाली तो क्या 3-4 दिन की है, वो लेबर भी नहीं है हकीकत में, काम भी ऐसा नहीं है कि बहुत चल रहा है बहुत ध्यान देना है, लेबर भी छुट्टी है मतलब आ ही नहीं रही, पर जो चल रहा है उसका तो ध्यान रखना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन है नहीं। मित्तल से डायरेक्ट एक बार बात कर लो कि साहब, आपने उस समय कहा था कि भाई साइड पर जो काम होगा उसकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं होगी इसमें कोई काम की जिम्मेदारी नहीं, रिकॉर्ड मेंटेन करना। और वो तो इतने आंकड़ा था कि पहले हमने जो इंजीनियर किया था उसको तो हमने कभी बुलाया ही नहीं। इसलिए मैंने एक बार आपसे कंसल्ट करना उचित समझा। तो अपने कांटों में हाथ तो गया हुआ नहीं है, अभी तक तो नहीं है। ठीक है, हाँ और कांटों में हाथ डालना भी नहीं है। ये तो ये बात कर लो, समझ में आती है, सेट बैठ जाती है अपने हिसाब से, वेल एंड गुड है, वरना जैसे आराम। आपसे तो उस समय उसकी बात हुई थी तो उसने क्या कहा था कि साइट पर आकर क्या देखना है? सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना है, रेलवे की तरफ से कोई इंजीनियर आए तो अपना इंजीनियर रेलवे वाला तो एकदम मस्त मूल आदमी है, बस, तो उसके सामने अपना रिप्रेजेंट करने के लिए बंदा होना चाहिए बस। वो तो आई नहीं, तो मतलब मैं आया हूँ उसके बाद से, एक तो वो छुट्टी पर है, और छुट्टी के बाद अपने शायद 9 को उसने ज्वाइन किया, उसके बाद भी साइट में नहीं है वो नहीं आएगा, वो तो महीने में कोई 1-2 बार आएगा तो आएगा। हाँ ऐसा नहीं है। मित्तल का नंबर है ना आपके पास? हाँ तो आप बात कर लो कि सर ने मेरे को जो कंडीशन बताई थी उसके हिसाब से तो यही है। साइट में तो आपने अपना बंदा छोड़ रखा है, वो साइट कंडीशन मेंटेन करता है। अभी बात करनी है या लेट हो जाए? अभी कर लो, चाहे सुबह सुबह कर लेना।
अभी तो गंगानगर वाले हैं आपको पता है। हाँ ये भी देखते हैं। और ठेकेदार और है, हाँ डबल संभावना है, तीसरा वीकेंड है, डबल संभावना है, सुबह बात कर लेना, ज्यादा बटन लेना ही नहीं है। अपने गति में हाथ धोने वाली बात है, सीधी सी बात है, हाँ वो वाला सीन नहीं है। नाले में कूदना ही नहीं है अपने को। मित्तल का आज और फोन, हालांकि मित्तल तो आज ही फोन है उसका तो, और वो आए साइड पर आए तो भी वो कभी कुछ ऐसा ध्यान देते नहीं है। उसने तो कोई ये जो अपने ड्राइंग है ना उसका टोटल वॉल्यूम मांगा था, दे दिया। फिर उसने कोई दूसरे इंजीनियर से पूछा था, तो मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, ऐसे ऐसे निकाल सकते हो। हालांकि एक तरह से गलत ही अपने सारे लेयर बोल रहे हैं। उसने पूरा क्यूबिक फीट मांगा है कि हमारी ये जो इंटर लाइन है ना 32 मीटर, उसमें कितना वॉल्यूम आएगा। उसने कोई और सारी बात की होगी तो वो कह रहा है कि हमारे वो इंजीनियर तो ये बता रहा है, देख लो मैंने इसी तरह से निकाला, ये उसके तो समझ आ जाएगा सही है। चलो हमें ज्यादा बात तो कहना नहीं है, ठंडा है। कोई बात है सीमेंट में जैसे आप कहने में तो खाली ऑर्डर लेना है, ऑर्डर लेने की बात सारी है, ग्राहक से डील भी करो, उसको टाइम पर डिलीवरी भी करो, ताकि कोई शिकायत आ जाए तो भी जवाब दे, वो बड़ी बात है। आप सीधा मित्र से बात कर लो कि सर से बात हुई थी, आपने कहा था कि हमें रिकॉर्ड में दिखाने के लिए इंजीनियर चाहिए, हाँ रेलवे की तरफ से आए तो हमारे रिप्रेजेंट के लिए चाहिए, रिकॉर्ड मेंटेन करना है। साइट पर आपके क्या चल रहा है उसकी मैं जवाब नहीं ले सकता, कोई काम गलत हो रहा है सही गलत, उसका तो अब क्या करें, हाँ। उसकी जवाबदेही लेने का मतलब सर, अब जैसे मान लो नो, हाँ अपने उसमें कोई मतलब नहीं है, साइड पे आपका बनता है, वो साइड संभाल रहा है, मतलब मैं चीजें मैनेज ही करनी है, तो टेक्निकल पार्ट है तो मैं कोई देखूं। टेक्निकल तो ये सर, टेक्निकल कह सकते हैं, मतलब वो कह सकते हैं, हालांकि ऐसा कोई विशेष नहीं है कि बहुत ही ज्यादा गहरे में जाना है, आपकी समझ में नहीं आती, सामान्य पढ़ा लिखा आदमी भी समझ सकता है, हाँ ऐसी ही बातें हैं। पूरी दीवार एक जैसी है, टेक्निकल चीज एक बार बता दी लैब होता है, अब उसको हमेशा वही चीज मेंटेन करनी है। नहीं तो अब आज लेट कम है, अब जैसे मान लो नींव की खुदाई है, अब नींव की खुदाई होनी तो चाहिए 4.25 फुट, वो रख रहे हैं 4 फुट, अब वो तो कल को लेकर इसको भी पंखा डालेंगे कि आपने भीतर डालकर नापा नहीं, ये 4 फुट की होंगे, ऐसी ऐसी बातें निकल कर आएगी। सीधा वो निकल नहीं अड़ेगा, वो फोड़ लड़ेगा। उनको कहते हो भाई आपका जो आप आदमी है पार्टनर है वो इस तरह से कर रहे हैं, और इस तरह से मैं हेडेक नहीं ले सकता आपकी साइड से। हाँ आप इंजीनियर हो, रेलवे की तरफ से आए तो ठीक है, एक बार मैं दूंगा उससे ज्यादा, तो फिर साइट पर जाने का भी क्या मतलब है, मेरे को तो ये समझ नहीं आया। साइट पे तो सिर्फ अपने इतना है कि कहाँ क्या हो रहा है एक नजर रहे बस, मतलब घंटे भर के लिए जाने का मतलब है कि वहाँ वास्तव में कंडीशन क्या चल रही है अपने को बस रहे, वरना वो क्या है ना घर बैठे थोड़ी पता चलता है, बस इतना सा, और कोई पर्पज नहीं था, पर्पज भी उसका कोई नहीं है, सिर्फ अपन उस चीज के टच में रहे, एक हल्का टच रहे, अपन बिल्कुल अंधेरे में नहीं हो, बस ज्यादा डीप में घुसना ही नहीं है, ठेकेदार जाने ठेकेदार के घेरे जाने। तो ये अब ये इसमें समस्या है, 2-3 आदमी ये इन्होंने ले रहे हो रेट में, भाई इनको तो करोड़ों का नहीं फायदा अपनी हो, तो नहीं है, लेकिन इनकी जो है ना मेन जो समस्या, तो ठेकेदार को हमेशा ही मिलो रेट में देते हैं सारे काम। पर ये बता रहे हो कोई दूसरा ठेकेदार की थोड़ा ज्यादा ही नहीं है, इसमें भी क्या है काम ढीला चल रहा है इस वजह से, वो तो ठेकेदारी हालांकि अपना इसमें कोई रोल नहीं है। अपना कोई रोल नहीं है, अपना कोई रोल नहीं है, ठेकेदार का हमेशा रोकता है, चाहे कितने अब वो लिया हुआ तो भी वो मेटेरियल चोरी करेगा आदत है, ऐसा है नहीं कि वो उन्होंने लिया एकदम परफेक्ट काम करो बढ़िया, तब भी नहीं करेगा, ठेकेदार का पेट कभी नहीं भरता।
अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट नीति से चलो, इधर उधर डोलने की जरूरत ही नहीं है। ठेकेदार के पास काम करने की मैं तो कोई सलाह ही नहीं देता। ये तो ठीक है, बैटरी गंगा में ऑफर ठीक रहा, चल लो। ठीक है, तो मना करे तो हम दे देंगे इससे, आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर देंगे। मैं तो एज पर फ्रॉम जो बात हुई थी उसके हिसाब से उत्तर दिया। आपको रिपोर्ट में दिखाने के लिए था, रिपोर्ट में दिखाओ, मेरे नाम कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट मेंटेन करना है मैं कर लूंगा। रेलवे की तरफ इंजीनियर आता है 3%, अब मैं खुद कर रहा हूँ ना, आधे इंफॉर्मेशन फोन होगा। रेलवे के इंजीनियर की तो हालत ये है कि उनके बाहर ले रखे हैं, एक सर आप इधर सकते हो। जानकारी के लिए पूछा हूँ सर, ये ड्राइंग है सर। अब इसमें जो वर्टिकल बार भी रखा है ना, दो दिख रहे हैं साइडों में, ये हिस्से में हम जा रहे हैं। बात तो आपकी बॉटम का देख रहा हूँ, बॉटम का है ये 4 बार है आपके। नहीं दाएं बार कितना है, ऊपर के जो दो बार है ना वर्टिकल, वर्टिकल 8 mm का, दोनों 8-8 के है ना। सारे 8 है, 8 है मेन है, 8 है डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, और नीचे वाला बार अभी देखो, 5 बार है आपके, 5 बार। ये जो एक बॉटम ये है, एक टॉप ये है, हाँ और इस टॉप और बॉटम के साथ में वर्टिकल आपका ये खड़ा है, ये हाँ एक ये खड़ा है। हाँ, तो ये हो सकता है कि आप ऐसे करके ऐसे खड़ा किया हुआ हाँ हाँ, मैं इसी को पूछ रहा हूँ, ये कितने एमएम का है। है, साफ है 8 mm का है। और यही बार आगे कंटिन्यू होगा यहाँ पर, वैसे मोस्ट प्रोबेबली यही बार कंटिन्यू हुआ है। डिसकंटिन्यू होने का सवाल ही नहीं, छोटी सी लेंथ है। एक बार ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये, हाँ 4 ही बार है। हाँ, तो अब एक बार इस पर अपन फोकस करते हैं। ये आप हिसाब से 8 का है, बिल्कुल 8 का है। पर यहाँ पर 12 दे रखा है कहाँ? तो नीचे। ये साफ दे रखा है। तो एक ही तो दे रखा है सर, अभी तो देखो आप, ये गलत हो गया है। ये डिस्ट्रीब्यूशन का दिया हुआ है। नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले तो गोला बना कर दिया है, और बिना गोला बना कर देखो इस बार पर इंडिकेट किया इसने। डिस्ट्रीब्यूशन का गोला बना के दिया है, और ये दो को शो करना चाहते, ड्राइंग मिस्टेक ही है। मतलब ये दोनों जो एरो दिए इसने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया है। बिल्कुल एक ही चीज से शो किया है तो दोनों एक ही चीज ही बताएगा ये। नहीं नहीं, ऐसा ही की चीज के लिए ये देखो, ये ऊपर वाला 12 mm है ना, इसमें गोला बना कर तो डिस्ट्रीब्यूशन को दिया है, मेन बार को इसने बिना गोला बना कर दिया है। ऐसा ही है ना, इसमें ऐसा ही है। फिर तो अभी ऐसे ही होना चाहिए। फिर तो इसको ये और ये अलग, ये फिर एक अलग लेना पड़ेगा। हाँ, पर ये फिजिबल नहीं है। मतलब ही नहीं है, अगर ये बार अगर अलग अलग हुई तो मतलब ही नहीं है। तो मतलब क्या माने इस ड्राइंग में, क्या माने इसका मतलब, दायरा कितना बनेगा। ये तो फंक्शन का 12 है, टॉप बॉटम 12 ले लो इसका तो ठीक है। वर्टिकल का अप्रूव्ड। तो मेरी नजर में तो ड्राइंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। बिल्कुल पहला लेवल तो ये है। दूसरा, अब इंजीनियर ने भी क्या है कि ये जो वर्टिकल बार दे रखे हैं ना, दोनों को 12 mm का दे दिया साइड पर।
ये उसने अपने हाथ से बना के ड्राइंग है ऐसा। तो ये दोनों वर्टिकल बार उसने 12 के दे रहे हैं। ये मैंने उनसे पूछा तो 15 मिनट तक तो उलझे रहे, ऐसे देखते रहे ये कि फिर उन्होंने कहा अंदर वाला 8 कर दो, बाहर वाला 12 चल रहा है। अंदर वाला तो वर्टिकल बार है ना, इसको तो 8 कर दो और बाहर वाले को 12 कर दो। ऐसे मन से ड्राइंग, फिर ड्राइंग का मतलब क्या रहा? अब देख लो, उसकी तरफ से तो इतनी ढील है जो टेक्निकल आदमी है, और वो जो ठेकेदार है वो छोटी छोटी बातों की। अगर करना ही है तो नीचे जो बॉटम में जमीन में रहना है, हाँ दफन होना है, इसको आप करो ना। इसको क्या 8 करें? इसको 8 करें मतलब इसका नीचे बॉटम को 10 को कर दो, खत्म बात। डिस्ट्रीब्यूशन भी 10 का, मेन भी 10 का, सफिशिएंट है। वो तो फिर अपनी दिक्कत मर्जी हो गई, हमने एवरेज करके कर दिया ऐसा। ये जो टॉप बार है, हाँ नहीं ये इसको बॉटम तो बार फिर है, करेंगे। हाँ ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ ये चारों 10 पे कर दिए। ये वट एक ये जो पेपर में वो किया हुआ है, ये 12 का, दो वर्टिकल ये 12 के खड़े कर दो। बाकी ये फिर इसको आप वो एक बार करना पड़ेगा। ये मतलब आपको करना ये पड़ेगा, एक बार ये बॉटम यहाँ पे खत्म कर दिया, हाँ दूसरा बार ये खत्म कर दिया, हाँ तीसरा ये पेपर वाला है। ठीक है। अब चौथा बार आप ये करो, ऐसे घुमा के। मतलब ओवरलेप लेकर देना है। हाँ ये बार एक सिंगल कर लो इसको। हाँ नहीं इसको ये ऊपर जो जा रहा है 600 वाला लिख रखा है इसको। कौन सा 600 वाला? ये तो नहीं ये तो यहाँ खत्म हो गया। ये जो घुमा हुआ है, देख ये तो यहाँ से आके ऐसे टेपर आके यहाँ तक आया है। ठीक है। इधर भी 600, इधर भी 600, ये टेपर है। हाँ ये बार है जो यहाँ से आके ये घुमा ऐसे, हाँ और यहाँ पे ये कंटिन्यूस इसको ऐसा कर लो। हाँ नहीं ये यहाँ पर आकर मतलब यहाँ खत्म हो गया ऐसा कह रहा हूँ। हाँ तो फिर जॉइंट बनाने के लिए फिर ओवरलेप देना पड़ेगा। तो वैसे मटेरियल की बर्बादी है। क्या? ओवरलेप होगा ना तो जॉइंट बन गया और मटेरियल भी ज्यादा लगा और मजबूती भी इतनी नहीं आएगी। मजबूती तो ये देखो ये आएगी। एक तो कंटिन्यू बार लगता है, नहीं, बार तो देखो कायदे से तो ये लगनी चाहिए, कंटिन्यू ही लगना चाहिए ना, हिसाब की बात तो यही है। और अगर वहां उनको इकोनॉमिकल करना है मामला के, मतलब इकोनॉमिकल भी हो, और मतलब और बचत है, और काम भी सही हो जाए, तो बेस्ट पॉसिबल ये है कि ये जो आपकी बात है की बात कर रहा हूँ, इसको लो 12 का, ठीक है ये यहाँ से लेके और कंटिन्यूसली यहाँ पे, ठीक है। 1 नंबर बात। दूसरी बात ये है, हाँ जो यहाँ पे आपकी खत्म हो रही है, ये भी लो 12 की, 2 नंबर बात भी 12 की, ठीक है और ये तीसरी भी 12 की। ठीक है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जितना भी है सारा 8 का। अभी उन्होंने यही दे रखा था वैसे, क्या है? आप जो होता है और ये टॉप है, इस टॉप को ये तो 12 रखा है। 12 मतलब नींव में सारी 12 का है यहाँ पे समझ। नींव में जो भी टच हो रहा है वो सारे 12 का चाहिए। और ये सिंपल सा ये मानो तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है सारा 8 का, जो बाकी दिख रहा है वो सब 12 का। यही है। तो अभी साइट पर उन्होंने जो दे रखा है ड्राइंग वो यही है। तो वो बेस्ट सुटेबल है मतलब उसके हिसाब से। पर इंजीनियर ने पहली बात तो ये देखा ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, ये ड्राइंग तो जो लिखी है गड़बड़ है, गड़बड़ है। गड़बड़ है। बेस्ट सुटेबल है ना। हाँ मतलब तो उसका अल्टरनेट निकाल रहा हूँ। हाँ, अल्टरनेट बता रहा हूँ, बेस्ट सुटेबल जिसको कहते हैं टेक्निक। उसको सुधार करिए आपने। हाँ, मतलब टेक्निकल सुविधा जैसे कि हमने 2 ही वैरायटी की बात रखी, 8 और 12 के। हाँ और 8 को मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया, तो टेक्निकली मेरी समस्या नहीं है, और जो मेन बार है उसको मैंने 12 का ले लिया, तो समस्या नहीं है। तो टेक्निकली भी ओके है, और फिर एग्जीक्यूशन भी ओके है, और मेरे साथ इकोनॉमिकल भी हो जाएगा। हाँ हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बेस्ट तो यही है, और दिखने में भी आपको कहीं पे वो नहीं लगेगा, काम हल्का है। हाँ यही क्या है, ज्यादा तरीके से लिए या ज्यादा लग जाओगे तो लिवर परेशान होगी, जाम किटे ही होगा उल्टा। वैरायटी स्क्रैप भी जाएगा तो वो भी काम नहीं आता, भी बात है। वरना छोटा सा स्क्रैप बता तो ये बनाने के काम आ जाएगा। ये वाले तो बनाने हैं, स्क्रैप में ये काम आ जाएंगे। ये तो सारे स्क्रैप में बना बोले।
बेस्ट सुटेबल तो यही है। अब उन्होंने देखो हकीकत बात ये है कि कोई हमारे इंजीनियर ने उसके रेलवे वाले ने उसमें बाहर वाला 12 रखने का कहा, अंदर वाला 8 रखने का। ये एक्सपर्ट का है, हाँ तकनीकी रूप से तो सही नहीं है, क्योंकि रिटेनिंग वॉल है। रिटेनिंग कहाँ है सर, ये रिटेनिंग नहीं है, बाउंड्री वाला है केवल। हाँ, तो बाउंड्री वॉल तो रेलवे मान के चलता है कि इधर भी कचरा गिरेगा, इधर भी कचरा गिरेगा मिट्टी, हाँ तो फिर ये रिटेनिंग वॉल का ही काम करेगी। और इसको आरसीसी का बना है इसी पर्पज के लिए है। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए थोड़ी बना रहा है, ये तो केवल डिवाइड करने के लिए। ईंट वाली दीवारें लोग तोड़ देते हैं, इसके बना रहे हैं। मलबा में नाचते हैं, डालते हैं, उसके लिए। मतलब दीवार खड़ी रहूंगा, इसे ही पर्पज है बस। दीवार खड़ी रहे पर्पज है, काम कर ले। और ज्यादा ही करना है तो 10 और 8 की वैरायटी रख लो, 12 उड़ाए दो। अपन तो कौन है, उन्होंने जो कहा है मैं आपको बता रहा हूँ। और उनकी क्योंकि ये जो वर्टिकल है, ये जो वर्टिकल है, ये तो दोनों सेम होने जरूरी है। ये भी बात ठीक है। ये जरूरी है। और ये जो टेपर है, ये 12 का होना फायदेमंद है, क्योंकि ये इस पे लोड आता है। ये इस जॉइंट का इलाज है पूरा। हाँ, ये बॉटम में जो है बार, ये टॉप में बार, इसका कोई खास रोल नहीं है, अपनी इस कंडीशन के हिसाब से खास रोल नहीं है। नीचे सारा जमीन में रहना है, सारा का सारा आठ का कर दो, क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो ये पूरी 12 हो जाएगी। और ठीक है, बॉटम का 12 है, अच्छी बात है, बॉटम का ही मेन काम करना है, टॉप का काम भी नहीं करना है। 3 बार 12 की कर दो, एक ये दिख गई बाकी। और नहीं नहीं, अपन का मतलब तो कहीं सर इंजीनियर ने बोल दिया बस, वो अंतिम से दिया। उसने 12 का बाहर वाला क्या तो 12 ठोक देंगे, अंदर वाला मतलब उसको करना है, कमीशन वो खाना है। हाँ। और गलत बनाएगी तो उसको अपना तो कहीं है ही नहीं, रिकॉर्ड आगे पीछे नहीं है, हाँ। कोई लेनदारी देनदारी कहीं नहीं है। इंजीनियर ने अपने लिए उसे एक आदमी और छोड़ देता है, और जो इंजीनियर का एक आदमी है, मतलब साइट वाले जो ठेकेदार गड़बड़ नहीं कर रहे, ठेकेदार का अपना सुपरवाइजर है। इंजीनियर ने तो अपना आदमी से जोड़ रखा है, क्योंकि ज्यादातर दही वगैरह क्या होता है, साधन खा रही है, कमीशन आ रहा है, लाख रुपए तनख्वाह आ रही है, लाख 2 लाख कमीशन आ रहा है, 20,000 का आदमी छोड़ दिया, अपने एकदम बेफिक्र है। और सही भी है, देखो अगर उस स्थिति में लेकर, क्योंकि वहां पर जाकर टाइम खराब करने से तो अच्छा 20,000 देकर। हाँ, हेडेक वाले से बढ़िया है, उसकी हेडेक खत्म है, एक रोजगार मिल गया। ये तो सही है। ठेके में ठेका हो दे रहे हैं किसी को। वो सब सामने वाले का, अपने को दिमाग लगाना ही नहीं है। दिमाग लगाना ही नहीं है, उनको कह दो नजदीक तो ठीक है, होने ये महीना है खत्म कर। हाँ, बता दो कंटिन्यू करना है या नहीं। पहले बता दो, दिमाग को चल रहेगा, एक तरह को डाल देगा, वैसे कंटिन्यू करते हैं। बात अपने पहले की ठीक है, ज्यादा है पालने की जरूरत है। हाँ इसके बाद इसीलिए ये बढ़िया था, एडवांस बोल दिया। मैं साफ मुंह पे कहा, मैं आपको जानता नहीं, विश्वास कैसे कर दूं। अगर आप इसे मित्तल से बिल्कुल परिचित नहीं है, तो आपके कैसे संपर्क में आ सकते हैं? मैं बता सर, साइट जो देखता हूँ, वहां पे जो मटेरियल सप्लाई करता है, मनोज नाम का ये कोई, वो यहाँ पे मटेरियल सप्लाई करता है। मेरी बात सही है। भद्राश्रम में आपकी क्या साइट है, मतलब ऐसा कोई पर्सनल व्यक्ति भी है? वो जो वहां पर जो मटेरियल सप्लाई करता है, वही बंदा इधर मटेरियल सप्लाई करता है?
हाँ, तो इस मेटेरियल सप्लायर से, क्योंकि ये यहाँ का लोकल है, मटेरियल मतलब क्या सप्लाई, सीमेंट ग्रेट तो सारे लोकल ग्रेट बदले। नहीं लोकल खुद लाता है, ये जहांगीर लाता है, जहांगीर खुद लाता है वो तो, ग्रेट बदल ग्रेट बदली करता है वो सप्लाई। ठीक है, कुछ कुछ टाइम के लिए जैसे जल्दी हो गई ऐसा हो सकता है। मेहनत मैं क्यों करता, जब मैं खुद नहीं कर रहा हूँ तो दूसरे को फंसाऊं क्यों? हाँ ये तो सही है, नहीं आपने ठीक ही सोच कर दिया है। नहीं, हमको सिर्फ ठेकेदारों को विश्वास नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए, जिंदगी में कभी मत करना किसी बात पर। ठेकेदार और बच्चे एक ही बात है, कहने को कुछ भी कहेंगे, करेंगे अपने मन की। एकदम आप उनसे सिंसिटी की उम्मीद करो, आप बेवकूफी है, आपको अफसोस रहेगा। स्पष्ट कह दो और 100% है वो सरेंडर करेगा। तो फिर अब मान लो एक बार सोचते हैं, मित्तल ने कहा कि भाई वो हमारे इंजीनियर तो आएगा नहीं क्योंकि मैंने ये बात कर है, फिर कोर्ट उसके बच्चे करेगा। वापस कम्प्लीमेंट करो उनका, आगोश का मैटर दूसरा इंजीनियर ढूंढने में जो उनको मिलना नहीं है, बात ये है असली। नहीं मिलेगा ना, मना तो नहीं कर सकता, क्या मिल तो सकता है इंजीनियर, नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिले, उसकी पहुंच नहीं हुई, हाँ उसको नहीं मिलेगा। तो रीजन है नहीं, उसको नहीं मिलेगा ना, ये बिल्कुल इसकी पूरी संभावना है। बस ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस है, यही कारण है। दिमाग हो जाता वो, टेंशन लेने की नहीं है। नहीं टेंशन नहीं है, क्या है कि आप इसमें थे इसलिए आपकी जानकारी में आपसे सलाह करके एकदम खुला खेलो, अपनी तरह डील करो, अपना कोई और बार कोई सब बचे नहीं। अपने पास सफल नहीं आएगा, जब वो खुद बात पे टिका बने रोल बदले, कहाँ किस मुंह से लेके आएगा? भाई आपने इंजीनियर मांगा, आपको इंजीनियर दिया, और लेबर थोड़ी मांगी थी। लॉन्ग वाली टूटने वाली हो रही कौन से जो बन गई है, तो क्यों? करेंगे डबलिंग होगी, मतलब डबल लाइन बनेगी कुछ महीनों में। भले ये तो काम किया पहले का सेंक्शन हो रखा है, इसलिए करवाना जरूरी है, करवा कर जैसे वो डबल लाइन का काम चालू हो जाएगा तो वापस टूटेगी नहीं, आसपास वाले घर उसको हो सकता है कि होता भी ये चेप में लगा हुआ है। वैसे तो सारी जगह आपको मालूम है ऐसे ही चेक देना है, तो ठीक है, खाना पूरी नहीं है। ये बात मेरे को उसने हसन ने भी कही, जो इंजीनियर का प्रतिनिधि है रेलवे वाले का, जानकारी मिली। मत करो, मतलब काम देखो क्या क्या हो रहा है दुनिया में क्या क्या हो सकता है अपन सोच भी नहीं सकते। इसकी कोई सीमा नहीं है। दुनिया नहीं, दुनिया बड़ी खतरनाक है। मतलब गधे पैसा कमा रहे हैं, मुझे वो गाना याद आता है,
श्री रामचंद्र कह गए कि ऐसा कर जो गाएगा हंस चुकेगा दाना दिन का कौवा मोती खाएगा। वो मैं सही में देखता हूँ और देखता हूँ तो मुझे फिर यही कहता हूँ इसका मतलब ही कलयुग है। ये तो है सर। हंस चुकेगा दाना दिन का कौवा मोती। चांगेड़ के जो पैसा वाला यूं समझो कि उनको रोना बाकी रह गया बस। लेकिन अगर उसका और फिर भी पता नहीं होगा कौन ठीक होगा। हाँ स्वार्थ है, पर ये स्वाभिमान का काम नहीं है। आज थोड़ा उसको प्रोग्रेस करना चाहिए मेरे को ये। आज की दुनिया के बाजार में क्या है ना कि स्वाभिमान की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं इतना भी क्या सकते नाम से किसी का। नहीं स्वाभिमान की वैल्यू नहीं है, साथ साथ के लोगों में स्वाभिमान की नाम की चीज भी नहीं है। मुश्किल से 5% लोगों में स्वाभिमान की चीज है। बाकी उन 5% लोगों के लिए अपना स्वाभिमान बचाना भी चैलेंजिंग वाला काम है। जी भाई खाना आवेदन कर दूसरा करे नहीं राजी राजी। हाँ स्वाभिमान होना और फिर उसको बचाना। आपके स्वाभिमान को तो मार्केट में क्या नखरे का संज्ञा दी जाती है। सीधा काम है स्वाभिमान को बचाना। करो तैयारी करो अपने तो फोकस उस पर करो। ठीक है सर। आओ अपने इसमें पेपर दो कल क्लियर कर लो। अब एज पर अपने बात हुई है उसके हिसाब से काम कर सकता हूँ। ये रहेगा लास्ट में वो भी सीधा करते हैं वो नहीं है तो बात सुन के कभी काम करो। हां ऐसे एक रूम में भी दे देंगे।
अरे मुलो शशि पापा को भेज हाँ नीचे भेज पापा को फ्रेंड है मुझे मेरा उधर लेके अरे उधर सुबह जैसा एक कंप्यूटर में अपडेट कर रहे हैं हम एक कंप्यूटर में नहीं तो मैंने ये बात और नहीं और लाल बेटा और मार क्या से फिर वो बैकग्राउंड और ये क्यों आ रही है वाइट आ रही है इन नॉर्मल वाइट और दैट इज मनोज का रिकॉर्डिंग adjust me but जो हेडर है वे और मार्क वर्ड क्या है थोड़ा कम काम मतलब भी और बैकग्राउंड दौड़ोगे वो नहीं यार लीव्स अप ऑन वास्ते मतलब हैं लग थोड़ा सा वर्ड में काम कम कराना हाँ जो मैं मनोज जेठ ही हूँ हाँ मैं मनोज जेठ ही हूँ हाँ सारे भी बैठे ही खुलेगा नहीं वो था उनमें तो खोल मोबाइल में खोल दे क्योंकि हमारे कंप्यूटर में स्क्रीन नहीं लेकिन डार्क मोड में जरूरी है उसके कारण ठीक है नॉर्मली 20 पर हाँ ये तो डार्क मोड में जरूरी है ये और मोबाइल में खोल ठीक है और डार्क मोड में जरूरी है किसी नहीं मोड में सर अब एक लैंग्वेज चेंज कर अब बॉक्स एक एक सेलेक्ट करना पड़से नहीं बॉक्स को एक एक सेलेक्ट करना पड़से नहीं तो या एक ही साथ जाए इंग्लिश में चेंज करना है हाँ इंग्लिश में चेंज करना है हाँ रुको एक काम इजीली कर सका
डॉक्यूमेंट एक साथ रख दीजिए। तो डॉक्यूमेंट अच्छा अच्छा पूरी डॉक्यूमेंट यानी सिलेक्शन को that's even जो प्रोसेस है और your process clicker your process चेंज तो करी होनी रीसेटिंग खराब कर दी रीसेटिंग खराब कर दी कंट्रोल से कर देंगे जिस थोड़ी देर रात खराब होंगी ट्राई नहीं तुम्हारा चेंज करे मैं बताऊं क्या कर सीधा मैंने ताकि सोने को तो कहाँ है पता है फॉन्ट है तो पैटर्न सेक्शन था आप आई दोबारा डाउनलोड करूँ क्या डाउन सेव कर दूँ अब आए नहीं करती देव में तो फोन पे भेजो इनने फोन फोन तो साइज ने कौन बोले तो ओ पहला इन्हें कंट्रोल ए सिलेक्ट कर इनकी बात चेंज करना वेरी सिलेक्ट कंट्रोल ए इशू है ये इशू लेकिन बॉक्स वाला सिलेक्ट करनी है सब बॉक्स अभी है सेलेक्ट कर अब करेगा अच्छा कलर तो सही समझ नहीं ओ कंट्रोल कंट्रोल जेड कर पहला इन्हें बिया चेंज करना पड़से पहला भी इन्हें मंगल फोन में लाना पड़से यूनिक कोड हाँ देख पहला मैं कह रही हूँ यही उससे भाई देख एक सेकंड ना एग्जांपल को देखो ये लाइन ले लो कॉपी फिर फाइल नहीं करना करने को से और ठीक हो गया हिंदी इंग्लिश पूरी फाइल का फॉन्ट कैसे चेंज लेगा पूरी फाइल और फॉन्ट 60 पेज है हाँ बाइलिंगुअल है यानी पार ही नहीं पड़ गया हाँ बहुत दूरी काम माने कोई क्या नहीं समस्या करे कंटेंट इंग्लिश में मिले बहुत दिक्कत है अब समस्या ज्यादातर जनसंख्या इंग्लिश भी है हाँ हिंदी खत्म है
लेकिन समस्या है कि 10 भाई 6 बैठे नहीं तो 2 ही रहे 4 इंग्लिश अब दोनों सेम कंटेंट दे रहे अभी इन्हें तुम भी मैं चेंज कर पछे ला लेना होगा सारी बदली करना पड़ता है या सीधा तो ये एक प्लेन हुए नहीं ये बिग प्लेन है वो तो ये तो टेबला देबला कई कई करो ये हम लोग कंटेंट बनाए हुए नहीं जिन्हें भी बहुत दूर है तो दौरो भाई तो है हम्म दाऊ है नहीं हाँ दौरो भाई तो है हम लोग से चॉकलेट में या आवाज समझ गयो मैं समझ गयो इट्स डाउनलोड वर्ड पूरी फाइल में कन्वर्ट करो और रिप्लेस करो ऑप्शन होगा कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड हाँ मान लियो आ गई मान लिया आ गई फाइल नहीं नहीं टेक्स्ट टू रिप्लेस है एक चैट जीपीटी ट्राई करो हो सकता है फाइंड एंड रिप्लेस चालू है क्या? चालू है फाइंड एआई શું કરતું એટલે તો नॉर्मल ही हो जाएगा go to the home page please replace everything
वर्ड काफी स्मार्ट हो गयो पहला नाउ पहला પછી हम स्टेप तो चलिए स्टेप बाय स्टेप में मुझे स्क्रॉल कर ऑडियो 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 find what place your person in the find what box. ऑडियो फाइंड what and me click format कभी देखो यार What box click format format then select font and find font and font choose the font you want to replace from the list and click OK. अपन किसे पृथ्वी पृथ्वी वन करके देव सु मंगल आना 010 तो है ठीक है ब्रो ओके रखते ऑडियो पे रिप्लेसमेंट में सेम करके कौन रहेगा आई थे के एल एंटर द ईमेल टोर ब्राउजर में देखा हाँ कई नाम है 1337X नो रिप्लेस ऑल जो है नीचे कर देता हूँ तो क्या नहीं है रिप्लेस ऑल एक मर्सिड की नहीं है रिप्लेस
अब एक काम कर, इन्हें कंट्रोल ले करी, कंट्रोल ले करी। कर तो सरी बिना बैठे मंगल ले रहा है तो देखा पर सीखो जो बनी मंगल है अब ट्रांसलेट करा दे मंगल वाला मंगल फोन कौन कौन के कारण है ये सारा है मंगल कौन अरे वो करके दे दिखे तो सही है। अब उठा लेंगे दे या इन्हें सीधो पीडीएफ कर सीधो कन्वर्ट करे कोने ऑनलाइन सब हां पीडीएफ क्या है पीडीएफ सेंड दे दीदी की इंग्लिश बोल दो हां बोलो दो सवाल कल ये इंग्लिश तो सेंड जो कर भाई नहीं जो so let's get started का नीचे click convert to process translating source language हिंदी अच्छा कर दे सकते से देखा और मिल रहा होने क्यों मैं देखी हूँ तो पीडीएफ बहुत करती थी पीडीएफ में नहीं आएगी नहीं बड़ा अच्छा मैग्नेट में करना हाँ मैंने मैग्नेट में करिए वो और डिलीट करना पड़ा
एक बार क्लिक करना दे को नहीं इसमें से लिंक नीट है तो बोले नेटवर्क सीख तो आगे हो टोरेंट में तो गेम मामला दो दिन तो समय है और बजाय रास्ता है हाँ वो नीचे मैग्नेट कर दिया कि लिंक ढूंढना पड़ेगा एक बार अब देख लिया मैंने और फिर तो जरूरी है ये तो डबल डिग्री इधर एक राइट ऊपर राइट सेव पेज हाँ कॉपी लिंक को आयो बनी हो बटेगी बगैर ई पर फिल्म में ले प्रिंट क्वालिटी और मिल जाएगा ओ यस प्रिंट जोरदार हो प्रिंट क्वालिटी और मिल जाएगा एक बार मिल गया जी के पास आइए ऐसे कलर डाउनलोड कर लो आराम से हां सिस्टम डाउनलोड कर लो
सुमोर Sí. Balon geçenler var. ऊपर एक बार है बाहर हाँ